Geeks has a section called Must Do Coding section. I think before Lead Code or Hacker Rank, I started with Geeks for Geeks. I think 3 to 4 months is really like a very little time to do, a very short time to do everything. But I think as a fresher, if you're able to get like anywhere between 6 to 12 lakhs, even that's so fine. Okay. Hey guys, this is Azim and welcome to the CodingShef. तो guys, आज की वीडियो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कंप्लीट रोड मैप के बारे में। सर्विस बेस्ड कंपनी से लेकर आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर कैसे स्विच कर सकते हो। गाइस, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि गाइस इस वीडियो के अंदर आज हमारे साथ हैं यशवंत सर, जो कि अभी पेपाल के अंदर प्लेस हुए हैं और जो वहां पर SG2 रोल पर वर्क कर रहे हैं। राइट, उनका ट्रांसफॉर्मेशन गाइस ये है कि सर्विस बेस्ड कंपनी में पहले वो वर्क करते थे, देन अब उन्होंने कुछ टाइम बाद एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच किया। यार, वीडियो के अंदर काफी सारी चीजें वो शेयर करने वाले हमारे साथ, उनकी जर्नी कैसी रही, क्या उन्होंने हर्डल्स आए, कैसे उन्होंने काम करने स्टार्ट किया, और कल्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, रेफरल्स के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर, और हम उस चीज के बारे में बात करेंगे कि लाइक मतलब अगर आप थर्ड ईयर में हो या फाइनल ईयर के अंदर हो तो आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, और अगर आपने अभी तक कुछ नहीं करा बट आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्रैक करना चाहते हो तो यार उस चीज के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यार अगर आप चैनल पर न्यू आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए गाइस, वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। Okay, so hello sir, how are you? Yeah, I'm doing good, Ajim. How are you doing? Yeah, I'm also fine. So काफी सारी चीजें मैंने वैसे बता दी है, बट मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा अपने बारे में और बताएं, लाइक आपका फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है, एंड आपने एजुकेशन अपनी कहाँ से की और अभी आप मतलब क्या काम कर रहे हैं। वैसे मैं बता चुका हूँ, बट आपसे सुनना चाहते हैं कि लाइक कुछ थोड़ा और बताइए। Yeah, sure, definitely. Ajim, I have completed my graduation in BTech Computer Science back in 2017. After that, I started working with Virtusa Consulting Service. It's a service-based company. After that, I made a switch to Verizon Data Services India, which is also a product into networking domain. Later this, currently I'm working with PayPal as an SDE2. This is also a product company, and I think this is my second product company. And great. So guys, अभी आप देख सकते हैं कि अभी मैंने कहा था कि सर एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं, तो यार ये इनकी पहली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं है। लाइक इन्होंने मतलब कुछ थोड़ा टाइम किया सर्विस बेस्ड कंपनी में वर्क और उसके बाद एकदम प्रोडक्ट में स्विच कर गए। ठीक है, हालांकि वो पेपाल से थोड़ी छोटी कंपनी थी, बट देन उसके बाद सर ने अभी मेहनत नहीं छोड़ी और फिर स्विच कर दिया एक बड़ी कंपनी में। दैट्स ग्रेट। ओके, फाइन। तो सर आपका बैकग्राउंड क्या है, लाइक मतलब आप कहाँ से हो, थोड़ा सा वो भी बता दें थोड़ा शॉर्ट में। Yeah, sure, definitely. I'm from Hyderabad, and my father is a government employee and mother is a homemaker. This is what my family background is. ओके, ठीक है। तो सर आपने जैसे अपने फर्स्ट कंपनी में अप्लाई किया, लाइक जो आपकी थी वर्चुसा, ठीक है, इट्स अ सर्विस बेस्ड कंपनी। सो सर्विस कंपनी में आने से पहले जो आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी वो आपने कौन से कॉलेज से की थी, लाइक टायर 1 कॉलेज था, टायर 2, टायर 3, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट के लिए, तो आप कॉलेज भी थोड़ा सा बताइए किस कॉलेज से थे आप। I did my BTech in VJIT, Vijay Youth Institute of Technology, Hyderabad, and I think it's a tier 3 college. Okay. It's a local engineering college, so anything besides IIT and IT, usually or triple IT could be, I think. Yeah, tier 3 college. बिल्कुल। सो यही चीज मैं सर से कहलाना चाह रहा था कि सर जो है वो भी एक टायर 3 कॉलेज से, नॉट टायर 1, NIT, IIT ऐसे कहीं से नहीं है। तो जैसे कि आप टायर 3 कॉलेज से थे, तो क्या आपके कॉलेज में कुछ कंपनीज वगैरह आती थी, जैसे अभी टायर 3 कॉलेज में कंपनी नहीं आती? Mostly startups and service-based companies used to come to college. Okay. There wasn't at least one product. I think even if there are 1 or 2 products, I think they used to have a very high cutoff, and you should select maybe a 1 or 2 at max, and that too maybe at a very less package, not at the standards of a product company. I think I think like any regular tier 3 college, okay, maybe like Tech Mahindra or some other companies like Scient, or okay, and these service companies used to visit regularly. ओके, तो मतलब वही चीज है कि जो नॉर्मल टायर 3 कॉलेजेस में आते हैं कि सर्विस बेस्ड कंपनी, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, TCS वगैरह, एक कॉलेज में आपके कंपनीज वगैरह आई थी। तो आपका कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ था या आपने ये भी ऑफ कैंपस की थी, जो आपकी
फर्स्ट कंपनी थी वर्चूसा? Yeah, I think it's off campus because when I was back in college, I got a startup, but I didn't want to take it up. But you know this, okay, in tier 3 colleges, or usually I think in every college you get placed into one company and they don't allow you to sit for other companies. Right. So I didn't like this because they had a 3 years bond agreement along with submission of original certificates until we pay this. I think I didn't like that part and I chose to look for job options outside my campus, and then I got Virtusa. Great. So मतलब सिनेरियो गाइस वही है कि वैसे कॉलेज के अंदर कंपनीज आती हैं बट उनमें से भी नहीं मिल पाती, तो उसके लिए भी फिर आपको उसमें से भी ऑफ कैंपस अप्लाई करना पड़ता है, और वही यशवंत सर के साथ भी हुआ। ठीक है, तो सर अब थोड़ी सी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपका जो पेपाल का हुआ, ठीक है, लाइक आपने पेपाल में स्विच किया, तो जब आपकी सेकंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो थी वहां से आपने पेपाल में कैसे स्विच किया, लाइक मतलब कितनी ड्यूरेशन रही, और जब आपने वहां पर अप्लाई किया तो मतलब किस रिसोर्स के थ्रू अप्लाई किया, तो ये सारी चीजें आप थोड़ा सा बताइए। Like I've been with Verizon for 1.8 years, I think. Back in April, a recruiter contacted me with a position with PayPal. So they asked me, okay, whether I'm interested to pursue it or am I looking for it. And as I noticed, PayPal is a pretty good product company, and I thought to go ahead with it. And they sent me a hackereth link, and after I cleared it, after 2 to 3 weeks, okay, they sent me an email asking me to attend interview on one day, and that's how it was. तो ठीक है, कितने राउंड्स थे और क्या क्या राउंड थे, उनमें क्या क्या हुआ, वो थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए। पहले राउंड, okay, I think first round is hackereth. Okay. So you need to be having 2 problems. Okay, you need to solve 2 problems. ठीक है। On hackereth platform. After this, based upon your score, you'll be shortlisted. And the next rounds, like I had like a data structures and algorithms round. Okay, first round is something like in a face-to-face interview. I think it's something like screening round, we can call it as. Okay, I think it was also a DSA round. And after this, again, there was a second round, like a DSA plus project round. I think there were questions related to DSA and also my project at Verizon, my current company then. Okay. And after this, it was a system design round. So for experienced engineers, there's also this system design round. You need to be aware about how to design the systems, what are the best practices, high level and low level design. And after this, there was a hiring manager round. So and last round was hiring manager. Total, these were the rounds I had then. So I think in short, आपके 4 राउंड हुए, राइट? फर्स्ट फेस टू फेस राउंड, और सेकंड डीएसए राउंड, और आई थिंक उसके अंदर कुछ आप बता रहे हो लाइक वो जो टेक्निकल भी उसमें ही था डीएसए के साथ। हर राउंड में डीएसए था। आई थिंक डीएसए इज इम्प्लिसिट इन एनी प्रोडक्ट कंपनी। डीएसए इज मस्ट ट्रस्ट। ओके, सो जो सेकंड राउंड था वो आपका हैकर रैंक पर हुआ, तो मतलब कुछ फर्स्ट राउंड हैकर में था। अच्छा, इसके बाद उस फेस टू फेस round, like screening round, and then another DSA plus project round, and then followed by system design and hiring manager. Total 4 rounds face to face, and before that there was a written test on hackereth. Great. So in short guys, यही आपके राउंड होते हैं। तो अब हम थोड़ी सी सर बात यहाँ पर कर लेते हैं कि आपने जो आपके राउंड्स हुए, इन राउंड्स को आपने क्रैक कर लिया अच्छे से, बट इन राउंड्स की आपने प्रिपरेशन कैसे की, लाइक मतलब क्या आपने रिसोर्सेज फॉलो किए डीएसए के लिए, ठीक है, और क्या आपने स्ट्रेटजीज अप्लाई की, आपने कितने दिन का टाइम इसके अंदर लगाया इस स्ट्रेटजी पूरी बनाने में, तो क्या माइंडसेट था उस टाइम पे? I think I have started actively preparing right from then we were in lockdown. I think I got a lot of time besides my regular work to practice DSA every day. That's when I think LeetCode also has started monthly challenges. Okay, I've been regular with it. And I didn't actually prepare specifically for a company because I was preparing more generic. I put my preparation more generic, like, okay, I do DSA and system design. I know for the fact, like, I've been in the industry for a few years, whichever the role I may take up the next,
there's also expectation for systems. So I started preparing in the direction. I think DSA I've been doing since college. Since college, as in college I had only the concepts, but I didn't solve any problems. Mm-hmm. So right when I was into when I started my career, then I started taking it up seriously and then started solving it. Mm-hmm. And I think I just kept my preparation regular. So far I think even I still do the same. Nothing like preparing for another interview or so. So I just make sure I solve at least a problem a day. I think that's what keeps me in touch with DSA or design concepts. DSA and design concepts, right? Perfect. ठीक है. और इसके अंदर जैसे आपने DSA स्टार्ट किया, ठीक है, तो DSA के साथ मतलब जो उसके रिसोर्स क्या थे? अगर आप कॉन्सेप्चुअल चीज़ों कुछ एल्गोरिथम्स की अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि एक एल्गोरिथम वर्क कैसे करती है, काम कैसे करती है इसमें, और क्या क्या चीज़ें होती हैं, और इस तरह के सिनेरियोज को सॉल्व करने के लिए कौन से एल्गोरिथम का यूज करना है, तो मतलब कॉन्सेप्चुअल चीज़ें वो आपने कहाँ से पढ़ी? Conceptual चीजें बोले तो I had the concepts right from my college. Whenever we used to have DSA subject in second year, in second year first semester we had data structures, and in second year second semester we had algorithms. I think I followed my classes regularly, and that's where my concepts were strong, but without considering my qualities at gigs for gigs. I think in gigs for gigs, if I don't understand a concept, I used to learn from there, and I used to parallelly see the problems related to that concepts. Gigs for Geeks has a section called Must Do Coding section. I think before Lead Code or Hacker Rank, I started with Gigs for Geeks. So I just got used to problem solving there, and that's where I moved to the platforms to solve them. ग्रेट. तो मेनली चीज़ यही है कि अगर DSA करना है तो कहीं मत जाकर, अगर स्टूडेंट गिग्स और गिग्स पर चला जाए स्टार्टिंग में और वहाँ से स्टार्ट करे अपनी चीज़ों को, तो वो आई थिंक बेटर अप्रोच है. ठीक है. अब एक सर क्वेश्चन मेरा ये है, अभी कुछ स्टूडेंट या हम कह सकते हैं कुछ प्रोफेशनल्स हैं, वो सर्विस बेस्ड कंपनी में वर्क कर रहे हैं, बट दे वांट टू स्विच इनटू द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. पूरे दिन काम करते हैं कंपनीज का, रात को थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, तो उस टाइम के अंदर वो लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए टाइम को? Okay, I think first priority is your job, whether it's your service or product company. So give priority to your job because you can learn a lot at your job too. Besides this, if you're preparing for a DSA or system design, or if you're preparing for a switch, regularly keep this as a practice. You solve at least a problem, maybe just before sleeping, after your work, or maybe at the times you get break for lunch, or maybe common evening break in office. I think if you can squeeze in some time and utilize it to learn a concept or solve a problem, that will definitely help you. But at least make sure you solve one problem a day. So this will help you get stay in touch with it. Maybe on weekends, like Saturday or Sunday, you can take out much time. Maybe if you have put 1 hour every day, maybe on weekends, each day you can put 3 hours, and you can solve more problems, understand in depth of the concepts and different techniques to solve this problem. So I think it would be like a continuous journey. I think this is a better way. You put a consistency every day and you learn something every day. So if you see actually maybe after 6 months or 1 year, if you look back, you'd have solved many problems and you'd have learned a lot. So whenever you attempt any interview, you wouldn't be really much scared, or the concepts be not unknown. ठीक है. So एक चीज यहाँ पर और पॉइंट आता है कि जैसे हम प्रिपरेशन करनी हमने स्टार्ट कर दिया कंपनी के अंदर ही अपने ऑफिस वर्क के बाद, तो हमारे पास कुछ चॉइस आते हैं, जैसे एक DSA हो गया, 4 सब्जेक्ट्स हो गए, एंड सिस्टम डिजाइन हो गया. तो तीनों को एक साथ लेकर चलना तो आई थिंक मैं नहीं मानता कि ये पॉसिबल हो पाता होगा कि तीनों अगर एक साथ हम लेकर चलें. तो मतलब उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है कि मतलब कितना चीज को क्या चीज कब तक करनी चाहिए? हमारे पास अभी 6 से 7 महीने का टाइम है, हम 1 साल बाद स्विच करना चाहते हैं प्रोडक्ट बेस्ड में, तो फिर वो कितना टाइम देना चाहिए? Okay, ठीक है. Yeah, I'll say in this context. First thing I already told you, first focus is your project which you're working with. Know in and out what you're doing every day. Doesn't matter even if you clear
DSA and system design round, if you're not able to justify your experience, there's a high chance you wouldn't get in, since you're applying for experience roles. So after a year or 6 months, you are not considered a fresh graduate. So project experience is much needed. So know about it, and having knowledge about project also makes it really clear for you to understand systems. So even definitely you'd be using some systems at your work. So you'd understand this, whether it could be a CI/CD or Jenkins, CI/CD Jenkins or anyways. बात वही है कि लाइक अगर हम अपना प्रोजेक्ट में सही से काम कर लेंगे, अगर सिस्टम डिजाइन भी हमें इतना भी नहीं स्टडी करवाए और प्रोजेक्ट से हमारा एक्सपीरियंस कुछ पूछ लेता है तो हम उसे बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई मैंने इस प्रोजेक्ट में काम किया है और इसमें ये इसका आर्किटेक्चर था, ये चीज हमने इसमें लगाई है, पाइपलाइंस यूज की है, इसमें डेवऑप्स का ये कॉन्सेप्ट यूज किया, तो हम बता सकते हैं, राइट? ये पॉइंट ठीक है। तो आई थिंक मेजरली बिल्कुल मेजरली हमें फोकस करना चाहिए ड्यूरिंग, अगर कोई कंपनी में काम कर रहे हैं तो डीएसए पार्ट पर। डीएसए स्ट्रांग हो जाए, ठीक है, तो सिस्टम डिजाइन भी हम बाद में थोड़ा बहुत कर सकते हैं। Yes, DSA. Once you have a strong concepts of DSA, right, you can actually move on to learning the concepts of system design. So system design, as in like maybe not every company be using every concepts of system design. See, there are even best practices than what we use at our current project too. Maybe if you're in a legacy project, you might be using the old systems. Like if you're in a project that is working on modern technologies and architectures, maybe you'd have a more exposure. So it's very much required for you to be aware of the like system design concepts, like whether it could be a microservices architecture or caching, DNS, load balancer. So all these are the common concepts, okay, you're expected to be aware of. So you can actually either go to, like, even if you ask me the resources, like I used the resource from educative.io, grokking system design interview, or else there's also a course called system design primer on GitHub. You can get it for free, and even there are videos by Gaurav Sen on YouTube or Coding Simplified. There you get the concepts of system design explained very easy. I think there are many resources where you can learn system design too. So once you get a conceptually clear, also work on, it's also better if you understand how to implement this. Maybe if you're actually using it at work, like microservice architecture, you will be aware about what are messaging queues, asynchronous communication, how do you be doing a distributed caching. So just be aware of these concepts in general, which is a high level design part. Besides this low level design part, you need to be aware about design patterns, principles, how to write a clean code. Following could be like design principles, like maybe solid principles or YAGNI, dry. So you need to be aware of these. Okay, so how to write a clean code, like how do you, okay, there's also a course from educative.io which is rocking object oriented interview. You could also look at this, and there are even many Medium blogs or resources available online. Okay, if you search for HLD or LLD, there are many resources. There are ample of them. I think follow one or two, because following too many is also confusing, because not everyone designs the systems the same way. I think you need to be having a general approach to everything. So that's what I can tell about design experience. I think design is asked only for experienced people, because they'll be having the exposure at a work with the systems in the work. Right. That's why it's not asked to freshers. Mostly, majority of them don't ask to freshers. Maybe even I see that there's an argument like even freshers are asked system design these days. Maybe being aware about the general concepts is good for everyone, but for experience, it's really more stressed upon. That's great. तो काफ़ी अच्छी चीज़ है आपने बताई यहाँ पर, और ये मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और बाकी जितने भी रिसोर्स की हमने यहाँ पर बात की है, तो हम एक काम करते हैं, उन सारी रिसोर्स की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, राइट? तो गाइज आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जो रिसोर्स यहाँ पर अभी सर ने डिस्कस किए हैं, वो सारी लिंक आप जाकर चेक कर सकते हैं एक बार। और उम्मीद करता हूँ गाइज आपको मतलब उसमें काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आने वाली है, राइट? अब हम बात करना चाहते हैं कि लाइक कोई एक ऐसे स्टूडेंट है कि जो अपने फाइनल ईयर के अंदर है, और फाइनल ईयर के अंदर भी वो अभी है 7th सेमेस्टर के अंदर, और 7th सेमेस्टर तक उसने भी कुछ नहीं किया, इवन ना उसने डीएसए किया, ना ही कोई प्रोजेक्ट बनाया, बट ही वांट टू गेट ए प्लेस इन द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। सो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है? लाइक अभी उसके पास टाइम ही मतलब 3 से 4 महीने का टाइम है,
तो क्या कर सकता है वो? प्रोजेक्ट्स बनाए पहले, या वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करे, डीएसए करे, क्या करे? क्योंकि कंफ्यूज रहता है, बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं। तो उसके लिए क्या आपके सजेशन है? I think 3 to 4 months is really like a short very time. little time to do, a very short time to do Right. everything. But at least you are aware about language concepts. If you're strong in any of the like object-oriented languages, like either if you take Java or Python, so you could work straight away on developing projects. So like उस केस में डीएसए ना करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, बेटर वो है। Yeah, okay. Just do few projects. Very sample projects, like okay, how to write a like sample front end, or how do you connect it with the processing layer in the back, and how this is connected to the back end. So how would you be able to do the CRUD operations or displaying something on a like UI? Maybe if you are asking me any specific technologies, okay, on front end you can be using React, on back end you could be using something like Node, yeah. a Spring, okay, Spring or Node, okay, Spring, okay, if you're taking Java, it could be a Spring Boot or Java. Okay, and if you're taking Python, Django or anything, it doesn't matter much, but you should be able to understand and write, okay, how can you, how an overall project works, okay, get an overall picture of the project, front end, back end, and a database layer. Choose any of the technologies, doesn't matter, but please be aware of it. So any sample projects, okay, you could do it in just 1 month, okay. That's not going to be taking much time. And then if your language skills are good, you can straight away learn the concepts of DS. Like okay, data, like if you could be taking array, stack, queue, linked list, okay, you can maybe in 1 or 2 weeks, okay, you just clear your concepts. And then you can immediately jump onto solving the problems. As I told, since you do not have much time, don't solve every problem. Solve only selected problems. If you ask me, the resource like Geeks for Geeks, you have section called must do coding section. The problems are segregated based upon data structures and algorithms. Okay. See, if you know array, it doesn't necessarily mean you can solve every problem related to array. You need to have an overall picture of it. Some problems in array, you may need to apply a priority queue like heap, min heap or max heap. And so once you're aware of TSA concepts in general, then you go ahead with solving problems, specific problems on Geeks for Geeks, and that's going to suffice, at least make you be on a safer side. Like learn about like common patterns in solving problems, like sliding window, two-pointed technique, maybe merge intervals. The common patterns also can help you, can get you handy at work. Can get you handy at interviews, so which you can use to clear the interviews. At least if you're not able to crack tier 1 products, you could at least be able to be in a place you crack tier 2 products or tier 3 products. Even they do pay good. I think as a fresher, if you're able to get like anywhere between 6 to 12 lakhs, even that's so fine. Okay, it's not necessarily you crack like Microsoft or Facebook or Google. Okay, right, obviously. Yeah, I think even if you are too much prepared to, there's not necessarily a chance companies visit tier 3 colleges. I think even companies like Amazon, okay, they are doing a lot of off-campus hiring, and I think trend has changed a lot better compared to our time. So the opportunities are plenty, provided you work for it. So like our preparation standard be in this way, that what if not we are getting into like tier 1 products, at least we should be able to fall into the tier 2 products or product startups at least. So they would get a lot of learning. I generally prefer very good products, startups or product-based companies in general compared to service companies, until unless it's a very good service companies like you said, okay, nagarro or EPAM, they're good. And I heard the culture there is good, and there's a lot of development scope. I think there are only few companies, okay, which actually provide a greater exposure like this in service. So better target product. So I think that's what. That's great. मतलब काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन हमें यहाँ पर मिल चुका है कि अगर आपके पास 4 मंथ है और 4 मंथ में आप ये करना चाहते हो कि भाई आपको एक अच्छी कंपनी क्रैक करनी है, तो सबसे पहली चीज सर के अकॉर्डिंग ये है कि आपको प्रोजेक्ट बना लेना चाहिए, कि ताकि आपको चीजों की मतलब पहचान हो जाए और चीजों का एक एक्सपीरियंस हो जाए, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाए कि आप काम कैसे करते हो, क्रैड ऑपरेशन कैसे करते हो,
UI कैसे बनाते हो, बैकएंड से कनेक्टिविटी कैसे करते हो, वो सारी चीज़ों का आपको नॉलेज हो जाए एटलीस्ट। जब ये काम कर लो आप और आपके पास टाइम बचता है, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि कोई जो भी आपकी लैंग्वेज है, सपोज दैट यू हैव मास्टर इन द एंड्रॉइड डेवलपमेंट यूजिंग द जावा, तो आपके पास जावा प्रोग्रामिंग हो गई, तो जावा में आपको कलेक्शन वाला पार्ट कर लेना है, और कलेक्शन करने के बाद आपको क्या करना है कि गिग्स और गिग्स पर जाकर एक सेक्शन उठाना है कि वहाँ पर काफी सारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, जैसे मैंने आपके ब्लॉग में भी देखा था, आपने मेंशन किए लिंक को। तो आर्टिकल बेसिकली है कि मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस, जो मतलब कंपनी में काफी ज्यादा टाइम्स पूछे जाते हैं, तो यार वहां पर आपको ऐसे आर्टिकल्स काफी ज्यादा मिल जाएंगे। सब वहां पर 300 से 150 क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको, अगर आप एटलीस्ट यार उनमें से 100 क्वेश्चंस को भी कर लेते हो ठीक से, और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं थोड़े बहुत भी, तो यार आप मतलब एक अच्छी कंपनी क्रैक कर सकते हो। अगर आपको मतलब माइक्रोसॉफ्ट या फैंग वगैरह भी नहीं मिलती, कोई इशू नहीं है, बट आपको एटलीस्ट 6 से 12 लाख के बीच में अगर मिल जाती है, तो यार कोई इसमें बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो 4 मंथ की प्रिपरेशन के अंदर भी आप एक अच्छी कंपनी क्रैक कर सकते हो। एक हो सकता है इट माइट बी एक स्टार्टअप हो या एक अच्छी सर्विस कंपनी हो, जहाँ पर आपको एक एक्सपोजर काफी अच्छा मिल जाए, या वो आपकी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ही हो सकती है। इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसमें कितना एफर्ट पुट कर रहे हो, राइट। हमें अपॉर्चुनिटीज का कैसे पता चलेगा? लाइक कोई अगर एक सर्विस बेस्ड कंपनी में है और वो प्रोडक्ट में स्विच करना चाहता है, या फिर अगर कोई फ्रेशर है और वो प्रोडक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज की जो अवेयरनेस होती है वो कहाँ से मिलेगी? लाइक कुछ स्टूडेंट लिंक्डइन भी चलाते हैं, बट फिर भी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती। Yeah, even I understand, because even I was at that place. Okay, so I think getting into product companies off campus is a very difficult job, because we don't know from which source they are hiring a lot of times, and how many are applying, and whether a profile gets shortlisted for interview or not. So like if you are in college still, so better try for an internships, because it is better, it is easy to be an intern than a full-time employee. So these companies have a like internship cycle, like they might be hiring somewhere around May, June, depends upon the company. Know about the times when these companies usually hire. Reach out to people in those companies if you know anyone. Maybe it could be your siblings or your alumni, or maybe some person whom you personally know on LinkedIn. So reach out to them and ask them politely whether they could pass your profile or give you a referral. And also make sure your profile is relevant to the role that you're applying. And so these companies have something like application tracking system, ATS. So they would be using those tools to see the profiles. So the profile with the largest keyword match would come up in the list. So make sure you prepare your resume according to this, and also try to reach out the recruiters if you can, and make sure your profile is worthy before you apply. So you need to have a decent knowledge of TSA or project experience, so this when they put you for interview, you should be in a place to clear it. So once your preparation is done, you can apply through these sources. And it's also subject to, because not guaranteed this you would get a call, but don't lose hope. Keep applying and try as many sources as you can, because being from tier 3, and it's not an easy task either to be an intern or be a full-time employee as a fresher. So make sure you try every other source, and maybe if you're not able to be able to get an internship from these big products, at least have some internship experiences in college, even from a smaller product startups. So like if you have on your profile this, you have worked as an intern in few startups, like, and you have a very good profiles on your resume, right? There's a good chances these companies might show interest in offering you an internship or full-time job. So make sure your profile is good first, and then keep applying. And if it's your day, and if the force is with you, you would get a call. But problem, or else, and also coming to this part, service-based companies. So if you're in a service-based companies, you already have an experience. I think now the tier 3 college is not going to affect you much. Now the quality of projects you done in your project, so that's what is going to matter. And even the same process applies for you, because since you have an experience,
look for the roles that have an experience that requires experience. Maybe you can apply on Naukri or you can directly apply on LinkedIn. Nowadays, I see this. Okay, product companies, at least a few product companies hire from tier 3. They don't discriminate much. You can actually switch from tier like service-based companies to product companies. The major problem is for the college students, because since they are from tier 3 and there's no exposure to the way they can contact them, they apply on careers. Most of the times profiles don't get shortlisted. And I think even these companies also conduct hiring challenges on Hacker Earth, open hiring challenges. See this, if there are any open off-campus or hiring challenges happening, you can keep trying there. I think I answered your question. You were asking something. Please go. अभी एक ट्रेंड चल रहा है फैंग का, एक फेसबुक, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह इस तरह की कंपनीज का। बट इनके अलावा ये बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं कि जिनकी वर्क कल्चर इनसे अच्छी है, पैकेज इनसे भी अच्छा देते हैं, और ऐसे काफी सारे स्टार्टअप्स भी हैं यानी कि जो मतलब नजर में स्टूडेंट को नहीं पता होता। तो मतलब वो कुछ ऐसे कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ प्लेस हैं कि लाइक जहाँ से हमें इनके बारे में अवेयरनेस मिल सकती है कि ठीक है हमें इनमें अप्लाई नहीं करना, बट हम दूसरे में अप्लाई करना चाहते हैं, बट हमें नहीं पता कि ऐसी कौन सी कंपनीज हैं, तो वो कहाँ पर मिलेगा हमें उस चीज के बारे में? I think these days lot of YouTubers have also started making videos, okay, saying that okay, companies besides FANG where you can apply, those who pay equally good as any FANG company. I think there are many YouTube videos, okay, you can actually look for it. And also there are many startups, I think, like Cure.fit or and even Danjo. I heard this, and even Swiggy. These days, okay, they also pay equally good as any FANG level company. So you can also start, okay, or Zomato, okay, these are product companies. I think you have to be, as a student from tier 3 college, I think you need to try out every other opportunity. Don't leave any stone unturned, because this is your career and you are responsible for it. So like, okay, maybe you might say to yourself, okay, like you may not get call, don't lose hope, okay, keep applying, who knows when you might get a call from which company. But when you get a call, you should be in a place that you clear it. Given a chance, you crack it. That's how your preparation should be. So you need to work way harder. See, like being like the challenges that you have compared to people in tier 1 colleges is they prepare well, they get good companies. That's not the only choice you have. You also have a responsibility of applying to the companies off campus. So you need to reach out to them and apply at multiple places, and finally one lucky day you may get a call. Once you get lucky to get a call and schedule an interview, you clear it. That's how it is. But anyways, okay, don't lose hope even if you don't get any product companies. See, even I myself started from a service company and moved to a good product company. It might take time, but it's not like it's never going to happen. Just don't lose hope. Great. So यार आप देख सकते हो कि मतलब काफी सारी चीजें आपको यहाँ पर आज इस वीडियो में मिल चुकी हैं। हमने कोशिश की है कि सारे पॉइंट्स को यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करें, और हमने डिस्कस किए भी, और सर ने एक एक क्वेश्चन का ऐसे नहीं कि मतलब जल्दी में कंप्लीट कर दिया, एक अच्छे से एक आंसर किया है, एक एक चीज डिटेल के अंदर। तो यार ये चीज काफी बढ़िया चीज थी। और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज गाइड वीडियो को यार लाइक करते जरूर रहिए। और वैसे मेरे एक क्वेश्चन लास्ट में और आ रहा है माइंड में, एक बार उसे भी क्लियर कर लेते हैं और फिर बाद में इस वीडियो को ओवर करते हैं, ठीक है? तो एक क्वेश्चन ये है कि एक स्टूडेंट है फाइनल ईयर में, और उसके पास एक सर्विस कंपनी का ऑफर है, राइट? और उसके मतलब डीएसए ठीक ठाक एक्सटेंड पर उसने कर रखी है, एक अच्छी खासी डीएसए है उसके पास, बट अभी उसके पास थोड़ा बहुत टाइम है, यानी तो 2 से 3 महीने और बचे हैं उसके पास। या तो वो रुक सकता है वो और थोड़ी और मेहनत करके प्रोडक्ट बेस क्रैक कर सकता है, ठीक? या फिर वो अभी ज्वाइन कर सकते हैं सर्विस बेस को और कुछ टाइम बाद प्रोडक्ट बेस क्रैक कर सकता है। तो मतलब क्या चीज उसे करना चाहिए? Okay, if you still have a time, right, don't stop. Okay, keep applying, keep giving interviews until the very last day you take up any new job. Great. तो मतलब ये है even it applies. Okay, even it applies to the experienced candidates. If they are not satisfied with the current offer, they might actually go for other interviews too. Maybe if they got another service company and they are looking for a better product company, they can definitely do it. Okay. See, and at the end of the day, you are the person who is going to work there for few years. So what's the point of going there somewhere just because you got it until you're satisfied? Keep trying.
There's nothing wrong in it. That's all. So in short guys, बात ये है, रुकना नहीं है आपको अप्लाई करते रहना है जब तक कि आप सबसे बड़ा पैकेज ना ले लो, ठीक है। कभी आप ऐसा सोचो कि यार 25-30 हज़ार की जॉब मिल गई तो यार कभी बाद में ना मिले, यार घबराना नहीं है। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर कि मैं कर सकता हूँ। जब तक आप चाहो कि भाई, जब तक आपको लगे ना कि अब इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता, ठीक है, और अब यार ले लेना चाहिए, तो आप तब लो, राइट। सो गाइज, आई होप गाइज आपके इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे, काफ़ी आपको मज़ा आया होगा। और गाइज सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यशवंत सर को जाकर आपको थैंक्स ज़रूर बोलना है, इनकी प्रोफाइल विजिट करनी है आपको, यशवंत सर को जाकर थैंक्स ज़रूर बोलना है। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप क्वेरी पूछ सकते हैं। जितने भी रिसोर्स सर ने शेयर किए हमारे साथ बताए हैं, वो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और गाइज बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए चैनल के ऊपर, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स को लास्ट में? Yeah, keep trying, don't lose hope. That's what I can tell you. Consistency is always important over intensity. Okay? Be consistent, be hardworking. Don't lose hope. That's all. Thank you. Okay, thank you sir. And guys, मिलते हैं हम नेक्स्ट इंटरव्यू में। और मैं कोशिश करता रहूँगा कि आपको ऐसे अमेजिंग पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके देता रहूँ कि ताकि आपकी हेल्प होती रहे। तो चलिए गाइज, इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।